जब आप इंटरनल एनालिसिस की बात करते हैं, देयर इज अनदर एलिमेंट दैट वी मस्ट अंडरस्टैंड एंड दैट इज आवर कैपेबिलिटीज। हम मुख्तलिफ लोगों के मुतालिक भी बात करते हुए ये टर्म काफ़ी कॉमनली यूज़ करते हैं कि भाई वो साहब बहुत कैपेबल हैं और वो शख्स इतना कैपेबल नहीं है। यहाँ पे हम ऑर्गेनाइजेशंस की कैपेबिलिटी और ऑर्गेनाइजेशंस की कॉम्पिटेंस की बात करेंगे। आइए, लेट्स टेक अ लुक एट व्हाट इज स्ट्रैटेजिक कैपेबिलिटी। सो एज पर द डेफिनेशन, स्ट्रैटेजिक कैपेबिलिटी इज द एडिक्वेसी and suitability of resources and competences that organization needs to have in order to prosper and grow. Now, ये दो टर्म्स हैं क्या, इनको समझना पड़ेगा। पहले हमने कहा adequacy and suitability, पहले हम इनको समझते हैं। Adequate का मतलब होता है किसी चीज का sufficient quantity में होना। अगर हम एक हॉस्पिटल खोलने जा रहे हैं और हम वहां पे कहते हैं कि जनाब बहुत बड़ा हॉस्पिटल होगा, उसमें 2 कमरे होंगे, तो आप कहेंगे कि भाई एडिक्वेट रिसोर्सेस तो नहीं है, राइट? सो एडिक्वेसी इज अबाउट हैविंग एडिक्वेट नंबर ऑफ रिसोर्सेस दैट यू आर टॉकिंग अबाउट। ऑन द अदर हैंड, एडिक्वेसी के साथ हमें सूटेबिलिटी भी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, हम कहेंगे जनाब हमें एक ट्रांसपोर्ट का फ्लीट, हमें डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाना है, हम एक घी की डिस्ट्रीब्यूशन एजेंसी खरीदेंगे और हमारे पास 8 गाड़ियां मौजूद हैं इस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। गाड़ियां कौन सी हैं? सुजुकी मैरान। यू आर इन ट्रबल बिकॉज they are maybe in numbers they are adequate but they are not suitable for the purpose. You cannot distribute ghee in Suzuki Mehran, right? Well, people might do that in some part of the world, but यहाँ ये जरा मुश्किल होगा. So when we talk about strategic capability, there is one serious component of resources. We need to have adequate and suitable resources जो कि tangible भी हो सकती हैं और intangible भी हो सकती हैं. इसके साथ साथ we also need something which is called competence. वो क्या चीज है? आइए मैं आपको समझाता हूँ. Competence is about having all those processes, procedures and systems through which you can utilize your resources. For example, you go to a hospital. Hospital में कमरे भी मौजूद हों, hospital में doctors भी मौजूद हों, hospital के अंदर nurses भी हों, hospital में medicines भी available हों, उनके ऑपरेशन थिएटर्स भी अवेलेबल हो, लेकिन उनके पास रूम रिजर्वेशन सिस्टम ना हो तो क्या होगा? सिर्फ ट्रबल होगी और कुछ नहीं होगा. सो हैविंग रिसोर्सेज इज वन पार्ट, बट हैविंग अ सिस्टम टू यूटिलाइज दीज रिसोर्सेज इज समथिंग दैट इज कॉल्ड कॉम्पिटेंस. नाउ जब कभी हम कॉम्पिटेंस की बात करेंगे तो कॉम्पिटेंस में हमारे लिए जरूरी है कि हम ये देख सकें कि हमारा रिक्वायर्ड लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस क्या है. देयर आर ऑर्गेनाइजेशंस जो अपने आप को यूनिक बना लेती हैं फ्रॉम द अदर्स, फ्रॉम देयर कॉम्पिटिटर्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिसोर्सेज. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक हॉस्पिटल रन कर रहे हैं और आपके पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद है जिसके थ्रू आप कोई बहुत कॉम्प्लेक्स सर्जरीज, बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स कर सकते हैं जो दूसरों के पास मौजूद नहीं है, तो आपने एक competitive advantage ले लिया over your rivals based on what? Based on a resource that you have, based on maybe some people that you have. However, there are certain other organizations in the world, organizations like Dell, जिन्होंने अपना जो competitive advantage है वो resources पे base नहीं किया, उन्होंने अपना competitive advantage base किया अपनी capability, अपनी competence पे. And such kind of competence is called core competence. Let me explain what Dell has done. Dell has developed a system of JIT, just in time inventory system. JIT inventory से आगे निकल के वो JIT production में चले गए. So what happens is that Dell receives all their sales orders through the internet, और जब उनके पास orders आते हैं तो हर घंटे पे एवरी आवर दे गैदर ऑल दीज ऑर्डर्स टुगेदर एंड वो अपने सप्लायर्स को उन मटेरियल्स का ऑर्डर प्लेस कर देते हैं जितनी उनके पास ऑर्डर्स कंप्यूटर्स के आए हैं. व्हाट दे हैव डन इज कि अपनी फैक्ट्री के आसपास विद इन द रेंज ऑफ 5-6 किलोमीटर्स उन्होंने सारे वेंडर्स अपने वहीं पे जमा कर लिए.
जो उन्हें हार्ड ड्राइव सप्लाई कर रहे हैं, LCD सप्लाई कर रहे हैं एंड दूसरी एसेसरीज दे रहे हैं. Every hour they place an order to their supplier and these suppliers are bound to deliver these goods in 8 hours. यानी 8 घंटे के अंदर वो सामान डेल की फैक्ट्री पे डिलीवर हो जाता है. जब वो डिलीवर होता है तो डेल उस सामान को उठा के अपने स्टोर में नहीं ले जाता, वो उसको डायरेक्ट प्रोडक्शन में भेज देता है. द रिजल्ट इज दैट दे कैरी नो इन्वेंट्री व्हाटसोएवर, सो दे हैव जीरो इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट. द प्रोडक्शन टाइम फॉर सच in Dell is less than 24 hours. This means that in less than 36 hours, whatever orders they have received are actually dispatched to the customers. The result is they have very little or no work in process cost. No to nahi kehna chahiye, but very little. They have no inventory holding cost, and the efficiency with which they are operating is giving them an edge over their rivals. My dear friends, it's not an advantage that is based on a resource. It's an advantage which is based on their system that they are maintaining. And this kind of a competence, or having this kind of a system, is called core competence. Core competence is a competence which basically gives you an advantage over your rivals.